Very good morning, students. Welcome to Krishna Sodhi classes. And today we are again with the poem The Aunt Jennifer Tiger, written by Andrew Rich, and it is for the plus 2 class, and the name of the book is Flamingo. Okay students, today we are going to do the poem The Aunt Jennifer's Tiger. Obviously, you come to know about that we are talking about the tiger which belongs to Aunt Jennifer. Okay? But when you come to know about in this poem that they are not the real tiger, they are the symbolic. And if we talk about this poem, you will come to know that it is totally a symbolical and a representative poem. Okay? And in this poem, Angry Rich, she just talk about the society where the male dominating society plays a very important role. Okay? And by this poem, she wants to indicate that whether you are in India or in you foreign, that means somewhere or somehow the families, the society is dominated by males. Okay, let's move to the poem. And in this poem, usually the words are symbolic. Somewhere or other, it is used in the form of metaphor or simile. Okay, let's move to the poem. Here is the poem, and here is the first extract of the poem. Aunt Jennifer's tiger prints. What do you mean by prints? Prints means to move with high steps. It shows that the tiger's movement with fearless feet, with fearless path, and they are moving with full elegance. Okay? And prints across the screen. Obviously, we are talking about the tigers which were not real. And here Aunt Jennifer, she mentions that here the poet, she's talking about Aunt Jennifer. She has just talked about a lady and she is Jennifer. And she has mentioned the screen over there. That means she is doing an embroidery or a painting on a panel. Okay? And on this drawing, the main concern was on tiger. Because somewhere or somehow, जब भी हम कोई कविता लिखते हैं या कुछ ड्राइंग बनाते हैं या कुछ सिंबॉलिकली कुछ भी प्रेजेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जहन का, हमारे दिमाग का उसके साथ रिलेशन होता है. यहाँ पे जो पोएट है वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को शो कर रही है और उसका कनेक्शन टाइगर के साथ डोनेट किया गया है, जबकि हमें पता है टाइगर पूरे के पूरे जंगल का इज अ बोल्ड एंड फियरलेस एनिमल्स. But here she is mentioned about a female and she is Aunt Jennifer. There is something contrary in that. Let's see what's that. Okay, bright topaz garrison. Okay, now we are talking about the bright topaz. जो आपको पता है येलो कलर का एक स्टोन होता है बेटा, काफी प्रेशियस स्टोन है, और उसकी जो स्किन, जो कलर जो है उसको रेडिकली किसके साथ डोनेट किया है? टाइगर की स्किन के साथ में. ओके, एंड द garrison. Garrison means the residential, और जो टाइगर्स है उनका रेजिडेंट कहाँ पे है? In the forest. Okay, of the world of green. And when you are talking about the forest, it is totally covered with the greenery. And here she says that कि tiger जो है वो उस greenery के अंदर वो एक जो yellow topaz है उसकी तरह वो shine कर रहा है. They do not fear the men beneath the tree. Here the tiger again symbolizes, and what she says, that they are not at all afraid of the men. And here it is again identification. And what was the indication? That Aunt Jennifer is totally, fully devoted and fully dominated by the male society. And they pace. Pace का मतलब होता है कदम आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना. Okay? In sleek. What do you mean by sleek? Sleek means smooth and elegant, bold slip के साथ में, with the chivalry. What do you mean by chivalric? Certainty. It just means very polite and very helpful way. And they pace in sleek chivalric certainty, full proud boldness और full politeness के साथ में वो जो टाइगर है वो आगे मूव कर रहे हैं. That means this full scenario is imaginary, and what she is telling about the boldness and the overcome of the views of Aunt Jennifer over the male dominating society. Let's move to the second extract. Aunt Jennifer's finger fluttering. Fluttering का मतलब क्या होता है? कांपना. Okay? Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, because exactly we are talking about that she is doing an embroidery. And find even the ivory needle.
हाथी दांत से जो सुई बनती है बेटा उसे हम इवोरी नीडल कहते हैं. ओके, नो फाइंड इवन इवोरी नीडल हार्ड टू पुल. नो व्हाट, एक बारीक सी सुई को उठा के चलाने में भी उसे दिक्कत हो रही है. वाई? बिकॉज वो जो एम्ब्रॉयडरी करना वो आंट जेनिफर की हॉबी है, लेकिन उसे डर है कहीं उसके हस्बैंड सोचेंगे कि कहीं वो घर का काम छोड़ के इन कामों में लगी हुई है, या फिर हो सकता है कि शायद वो आके उसके ये जो हॉबी है शायद उसे एंटरटेन ना करे. तो शी इज फियर समवेयर, दैट्स वाज द रीजन दैट हर हैंड्स वर फ्लटरिंग. ओके बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेकंड लाइन. The massive weight. What do you mean by massive? Massive मतलब भारी, heavy. The massive weight of uncle's wedding band. Whenever you wear, you are talking about the massive. Massive यानी भारी. आपको पता है वेडिंग रिंग के मतलब या फिर आप अंगूठी पहनते हो, या फिर हिंदू जो हमारे जो इंडियन कल्चर के अंदर है, जो हम लोग वेडिंग उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग एक वो चूड़ा पहनते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, यहाँ पे मैसिव वेट है, उसमें हैवीनेस नहीं है, लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, what does it indicates? It indicates responsibility and submission. Okay, and an Indian woman can understand it much better. Okay, and being in a joint family when you are talking about, and sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, and that is the responsibility and the submission that is in the form of the massive wedding band which she is carrying on her hand. Okay, when Aunt is dead, what she is telling, that when Aunt is dead, her terrified hand will, here she has used, our poet has used Andrew Rich, she has used the will, she is just assuming कि अगर Aunt Jennifer की उसकी डेथ भी हो जाती है, तब भी उसके कानों में वही ऑर्डिनल यानी कि उसके हस्बैंड के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू कैरी ऑन, इन सब चीज़ों की इंस्ट्रक्शन अभी भी उसके कानों में ऑर्डिनल सुनाई दे रही होगी. And still ringing their ordinal she was mastered by. And what she is mastered by? She is mastered by Uncle Jennifer. And the tiger in the panel that she made, that means she is fear. इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं, इतनी ज़्यादा डोमिनेटेड हैं कि यहाँ तक कि उनका मानना है कि डेथ के बाद में भी उन्हें वही डोमिनल्स ऑर्डिनल्स अभी भी उनको सुनाई देंगे. एंड शी इज़ जस्ट मेड अ कॉन्ट्ररी. अब वो अपनी फेयरनेस, अपनी सबमिशंस को ऐसे तो दिखा नहीं पा रही थी, तो उन्होंने अपना सिंबोलिज्म किसको यूज किया, एक कॉन्ट्ररी मैरिड लाइफ को एक टाइगर सिंबलाइज स्पिरिट के साथ में शो किया है. यानी कि जो चीजें हम नहीं कर पाते उन्हें हम किसी न किसी रूप में तो दिखाना चाहते हैं. इसीलिए यहाँ पे जो आंट जेनिफर्स हैं उन्होंने टाइगर उसमें एम्ब्रॉयडरी करने की सोची. ओके, and the tiger in the panel that she made will go on prancing. लेकिन जो टाइगर्स हैं, जो हस्बैंड हैं उनके आंट जेनिफर के, वो उन्हें शायद रोक सकते हैं अपनी व्यूइंग, अपनी हॉबी को अपडेट करने के लिए, लेकिन उनका क्या मानना है, विल जो उन्होंने टाइगर जो बोल्डनेस और क्लियरिटी, पोलाइटनेस और हेल्पफुलनेस का साइन है, वो आगे मूव करेगा एंड विल गो ऑन prancing. किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ते जाएंगे. एंड प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा प्राउड है बिकॉज दे आर द डोमिनेटिंग ऑफ द फॉरेस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टाइगर. एंड proud and unafraid because tigers are not at all afraid of anyone. As Aunt Jennifer, she has mentioned in the very first line that Aunt Tiger prints across the screen and they do not fear of the men beneath the tree. Okay beta, this is all about the poem, and in this poem whenever you are talking about regarding the board examination, the massive weight and the tiger symbolic the spirit, these are the very important question regarding your board examination. And whenever you are talking about this, obviously the symbolic system used to takes place. That is, what do you mean by massive weight of uncle's wedding band? That is an important question, whether it is comes in an extract or whenever this line is given under the comma, and you have to mention what exactly it is defined by Andrew Rich in this poem. Okay student, that's all about this poem. Thank you very much and have a nice day.